everyone, welcome to this session. I'm Niharika John, your faculty of English, and we have some mains level questions to practice in this session. If you are new to this channel, make sure to subscribe because आपको regular sessions मिलते रहेंगे. मेरी classes का जो schedule है, it's something like this. We have our main channel which is C Mentors, and इसमें मेरी classes होती हैं Mondays, Wednesdays, and Fridays. 1:30 p.m. and on this channel also I have live classes at 1:30 p.m. unless and until issue technical issue or something like that appears, classes live ही होती हैं. So on this channel the classes are on the other 3 days, जो कि है Tuesdays, Thursdays and Saturdays. Okay, so please make sure you have subscribed both the channels. ऑल्सो यहाँ पे आपको दूसरे सब्जेक्ट की भी क्लासेस रेगुलरली मिलेंगी. इट्स अ ग्रेट सोर्स फॉर यू टू हैव अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस एंड गाइडेंस. Do check out our paid courses, which are exam oriented, exam targeted, along with one-on-one mentorship, which is super important for any of you who is seriously attempting any exam. तो आप लोग वो जरूर चेक करें. We'll start doing the questions. So I have triple filler to begin with, and triple filler, as the name suggests, you have 3 blanks to fill. So आप इसे fill करेंगे and then I'll go ahead and describe all the answers. That means I'll tell meaning of all the words, tough words, including why answer is the answer of the question. Answer here is A. Triple blanks may look so much of work to do, but A easy होते because at 3 places since you are checking if the word fits or not, आपको मिल ही जाता है a combination where all 3 fit. Okay. Now here you can see the biologists prefer the system of nomenclature, that is naming something, to the dash new system because if it was less succinct on the one hand, it was more lucid on the other, in my opinion. So now here the adha sentence padh ke we get to understand there is a comparison. Okay, so biologists prefer the ancient system to new system. न्यू का whatever opposite word is, क्योंकि एक प्रेफरेंस है ना, तो न्यू को नहीं करते हुए दे प्रेफर द एंशिएंट ओल्ड. देखो एंसेस्ट्रल का मतलब होता है रिलेटेड टू आवर एंसेस्टर्स, कंबरसम थकाने वाला होता है. प्रिमिटिव वी कुड हैव सेड. कॉम्पैक्ट मीनिंग नहीं देगा, इट इज एन एडजेक्टिव बट मीनिंग नहीं देगा. So definitely what you get here is ancient or primitive. Then it was so this system to the dash new system. New system कैसा है? Because if it was less succinct on the one hand, it was more lucid on the other. तो इसका opposite new system है. It is concise. Okay, the other one is less succinct. तो यहाँ पे concise बोलेंगे. Now other words elaborate है, that means बहुत सारा उसमें description मिलता है. Clairvoyant व्यक्ति को बोलते हैं usually those who believe in forecasting, telling the future and all, psychic in the fashionable word. Prolix का मतलब होता है something which is prolonged, protracted. That also makes no sense because यहाँ पे less succinct जो है, that means
it is protracted here, which is the old system. So concise tak aate aate, second blank tak aate aate, you are very sure of the answer. So definitely यहाँ concise आएगा. And in my opinion, though, orthodoxy seems to carry more weight than progress with Okay, so this is one word, biological scientists. Okay, now here it says they prefer old system, and hence I think so that the orthodoxy means जो पुराना है वही करना है. It carries more weight than the progress. उनको progress नहीं करना, उनको पुराना तरीकों से ही continue करना है. And that's why here you have this. Okay, now denial, psychic extra word था, please ignore that. तो यहाँ पे नहीं था, it's just written over here for the meaning. Heretics भी वही होते हैं. यहाँ पे we wanted something that seems to carry more weight based on the previous information. तो वो केवल orthodoxy था. I don't think बाकी words के meaning इतने important है. And I mean they are easy words. Okay. So here the answer is B. Apart from occasional gesture to sophisticated religious believers, Dawkins tends to see religion and fundamentalist religion as one and the same. So apart from occasional discursive gesture to sophisticated religious believers makes no sense, because discursive का मतलब होता है something which is uh, here and there, it is verbose, full of something. It also means something which is quite elegant. तो वो भी यहाँ पे gesture को समझाने के लिए एक correct adjective है नहीं. Perfunctory means it is brief. Okay, it is something which is there for a short period of time, जिसे हम fleeting भी बोलते हैं. It could also mean something जहाँ पे बहुत ज़्यादा interest नहीं है. So apart from occasional casual gesture to sophisticated, quotation है ना, religious believers, Dawkins का दूसरा तरीका है देखने का. It sees both a religion and fundamentalist religion as one and the same, which is not only grotesquely false, but it is also a device to outflank any more reflective kind of way. किसी चीज को outflank करना is, understand this way, okay? It is to maneuver in some other direction, okay? किसी चीज को आप हटा रहे हो, okay? और स्पेशली अपने अपोजिट वाला जो भी ऑपोजिशन में है, so you are moving around the side of that person, ताकि अब वो misdirect हो जाए या दूसरे डायरेक्शन में चले. So outflanking any kind of faith by implying that it belongs to the coterie and not the mass. Mass तो आप समझ ही गए होंगे. तो not to the mass है, तो एक coterie is a clique, CLIQUE. It means some people coming together as a group and they have common interest. That's why यहाँ पे जो था, it was the apt word, because उनका belief एक है. So such a thing
it belongs to just a group of people believing in the same thing and not everyone. That means not to the mass. अब यहाँ पे जो बाकी वर्ड्स हैं एक बार उनको हम देख लेते हैं. Caucus, it means a parliamentary party. Okay, so in case you are wondering कि यहाँ पे caucus क्यों नहीं आया, so there is a reason. Okay, गैंग नहीं बोलेंगे. गैंग जो होती है वो क्रिमिनल्स की या फिर मस्ती करने वालों की उस कॉन्टेक्स्ट में होती है. कबाल एंड कॉटरी कुड हैव बीन यूज बिकॉज दोनों का ही मतलब होता है एक क्लिक. लेकिन कबाल इज मोस्टली यूज इन द पॉलिटिकल डोमेन जिसमें सेम एजेंडाज होते हैं. वो लोग जब साथ में आते हैं तो उन्हें कबाल बोलते हैं. कोजेंट इज एनीथिंग दैट इज वेरी पावरफुल. ये तो अलग ही एडजेक्टिव है. तो बिलोंग्स टू द कोजेंट. आई नीड अ नाउन, तो मैं यहाँ पे वो बोल ही नहीं सकती थी. ओके, एनीथिंग जो इवेड करते हैं. डू यू वांट मी टू टेल द मीनिंग ऑफ दिस? बता देती हूँ. अवॉइड करना. पैसिव इज जहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटी नहीं हो रही हो. बीइंग डिलीटेरियस आपने अक्सर सुना होगा. डिलीटेरियस इज समथिंग विच इज इंजूरियस, जहाँ पे डिसएडवांटेज है. ओके, डिफरेंशियल इज इजी वर्ड. देन हाँ, बाउडलाइज. ओके, सो बाउडलाइज दैट मीन्स किसी चीज को सेंसर करना, एडिट करना. Other words which are tough here. Discursive, anything which is something verbose. I already told you about this, so bata chuki hu main meaning. I think we are done with the meaning. Now it's your time to arrange these sentences into a paragraph. These are some great sentences with good hints. इतना मुझे बताना नहीं था पर ठीक है. प्लीज स्टार्ट वर्किंग ऑन द अरेंजमेंट. देयर इज नो ऑड एंड सभी का अरेंजमेंट होगा.
Okay, so answer is DACBEF here. It says he gave up soft drinks, hot lunches, all these things to save every dime for his dream car. It's a plan he is following. So he कौन है and ये अचानक क्या हो गया, ये सब ड्रीम कार क्या है? Lot of things to be discussed. A little over 14 months later, the car was his. So whenever आप later की बात करते हो, means there has to be a reference point of time. Later than what? या तो डे होगा, डेट होगी, या फिर एक सेंटेंस में एक्सप्लेन होगा, दैट स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम, एंड उसके 14 months later ऐसा हुआ. In 47, I met an auto mechanic who had developed a passion for new step down Hudson automobile. So D is of course the first one. It introduces us to this auto mechanic. He was elated and felt ecstatic about owning the car. अभी तो ओन कर ली, पर कहाँ, कब आई उसके पास कार? बी में आई. द कार वॉज हिज, तो बी एंड ई एक पेयर बन गए यहाँ पे. He said the little sacrifices he made were nothing compared to the enjoyment and satisfaction of owning. This is his statement post owning the car. तो ये बाद में आएगा. E फर्स्ट है, बी ई साथ में आ रहे हैं, F उसके बाद में आ रहा है. A है how he worked to get his dream car. तो डेफिनेटली वो ड्रीम कार ओन करने की स्टोरी के पहले आएगा. C says the price of the car was nearly $2,000. तो यहाँ पे कार की ड्रीम थी, क्या करा उसने, एंड देन वी आर टॉकिंग अबाउट द प्राइस ऑफ द कार. फिर उसको कार मिल गई एंड ही वॉज हैप्पी. सो इस स्टोरी पैटर्न में था जो आप बहुत ही इजीली, बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. आपको इसको वापस अरेंज करना है. 5 sentences आर देयर. थोड़े लेंथी सेंटेंसेस है, बट ट्राई टू फोकस ओनली ऑन द हिंट वर्ड्स. रीड सब कुछ करना है, फोकस के हिंट वर्ड्स पर रखो.
Okay, so here the answer is BDAEC. The experience gained from a 2-year biosurveillance program in Tamil Nadu district indicates that this elegant idea of using mobile phones and computers uh, to generate and analyze health data can deliver good results, can do something. Mobile wireless technology have the potential to aid speedy डिटेक्शन एंड ऑल. तो बी जो है ये एक PYQ है. हमने एक बार और क्लास में PYQ करा था. आई होप नाउ यू रिमेंबर दिस थिंग अगर आप प्रीवियस क्लासेस अटेंड कर रहे हो तो. एनीवेज, so B is the first one. Central to the initiative is a team of health workers who use simple Java enabled phones equipped with a custom application. Central to the initiative. When combined with the power of computers and special software, they can work in real time. When combined with, तो किसको कंबाइन कर रहे हैं? ऑफ कोर्स बी में जो हमने टेक्नोलॉजीज बोली है हम उसको कंबाइन कर रहे हैं. तो बी यहाँ पे डी के साथ में आ जाएगा. बी एंड डी में वी आर इंट्रोड्यूसिंग कि यहाँ पर हो क्या रहा है एग्जैक्टली. So B and D, they come together. We are talking about merging mobile technologies with the power of computers, etc. Then E says the project led by them is worth studying as a model. Okay. अब ये मॉडल में यहाँ पे सेंट्रल टू द इनिशिएटिव मॉडल या फिर प्रोजेक्ट, दे आर वन एंड द सेम थिंग. तो यहाँ E एंड C विल कम टुगेदर बिकॉज इस प्रोजेक्ट में द टीम ऑफ हेल्थ वर्कर्स सबसे इम्पोर्टेंट है. तो बहुत क्लियरली समझ में आ रहा है. नाउ ए को रखने की जगह या तो ये है या आखिरी में है, बट यू कैन सी द एक्सपीरियंस गेन्ड फ्रॉम अनदर प्रोग्राम इंडिकेट्स दैट दिस आइडिया मतलब कि मैंने जो बी और डी में बोला है इमीडिएटली आफ्टर इट आई विल यूज ए. हेंस सेइंग दिस एलिगेंट आइडिया विल मेक सम सेंस. तो आपका आंसर बी डी ए ईसी हो जाता है. ए आखिरी में नहीं आ सकता. नाउ आई अंडरस्टैंड ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है रीड करने पे. आई वॉन्ट यू गाइज टू कीप द वीडियो ऑन फुल स्क्रीन. आई एम सॉरी फॉर द नॉइस. एंड प्लीज नाउ कंटिन्यू टू सॉल्व द पैसेज, आंसर द क्वेश्चन. There are 3 questions based on this passage. So often you get small passages in your SBI mains exam. In fact, any mains exam where objective questions are asked. तो छोटे छोटे passages 4-5 होते हैं where you have 2-3 questions each passage.
First answer is B. I'll explain all the answers together. Please go ahead, do the next one. Answer is D. Next question. Answer to this one is first and second. Now, please understand one passage, three questions, lot of comprehension to be done. Now, पहला question है, which among the following is going to give us the logic behind SEBI decision to monitor the functioning of the agency? Amidst the rising number of defaults, the chief regulator is taking the fight to what it thinks is the enemy rating agency. So यहाँ पे we get to know that अभी तो ये rating agencies के ऊपर के पीछे पड़े हुए हैं. So SEBI has asked the agencies in country to, among the other things, clearly state probability of default of the instruments they rate for the benefit of investors. Okay, so credit rating agencies have not provided credible information regarding various instruments of the market, तभी तो clearly state करने के लिए बोला है.
right? We can see there have been a record of 160 downgrades of debt instruments. This is more than the earlier ones, and there have been defaults and all. But if SEBI has asked the agencies to clearly state, means earlier it wasn't clear. Earlier, the credible information was not provided. It is as simple as that. So the logic behind the decision was पहले नहीं मिला तो अब कुछ करते हैं. We have to make a decision. We have to ask them. So इस वजह से आंसर आपका B था. Next question, whenever you have such questions where multiple sentences can be your answer, थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान से आपको चीज़ें पढ़नी होगी. Now, it says, if added to the passage, which would make the argument of SEBI regarding the main enemy in the recent defaults infructuous. Now, कई बार आपके पास में ऐसे challenges आएंगे that you will be stuck probably on a vocab. अगर क्वेश्चन की जो वोकैब है अगर वही आपको समझ में नहीं आ रही है तो फिर हम इसे कैसे सॉल्व करें? Isn't it? I hope you are understanding. So which of the following is added to the passage would make the argument of the SEBI? किस तरीके से SEBI regarding what? SEBI का मेन एनिमी यहाँ पे जो है रेटिंग एजेंसीज को बताया है. Recent defaults infractions. तो उस चीज़ को समझने के लिए फर्स्ट try to understand the passage. Of course passage तो हमको समझना ही है. अभी कोई भी infractuous होती है चीज़, so हिंदी में exact word मैं नहीं बता पाऊंगी. I'll try to explain in English itself. It talks about जहाँ पर एक fraction create हो रहा है. Okay, now the companies that are rated, now the companies जिनको already rate मिल चुका है, not required to provide full information to the credit rating agencies while getting verified. तो वे वेरिफिकेशन कैसा हुआ? यहाँ पे ऑथर हमको आगे जो बता रहा है वो ये बता रहा है, आधा पढ़ लिया, मैं उसके आगे से पढ़ूंगी. There have been a record of so many downgrades. Debt instruments used by prominent prominent companies, including all them. This spate of defaults, which may well be a sign of turning off the credit cycle, may have forced SEBI to crack the whip on credit rating agencies. तो क्योंकि डिफॉल्ट बढ़ते जा रहे हैं तो यहाँ पर क्या इस तरीके से हो रहा है उसको बताया जा रहा है. ओके, आई होप इतना समझ में आ गया होगा आपको यहाँ पे किस मैटर के ऊपर बात हो रही है. नाउ आगे चल के हम अगर देखें, notably the agencies will have to push information on how their performance of the rating instrument debt instruments compares with the benchmark created in consultation with SEBI. अभी क्यों डिफॉल्ट हुआ, क्यों इस तरीके से हुआ? द रेगुलेटर बिलीव्स दिस विल हेल्प इन्वेस्टर्स टू बेटर गेज द परफॉर्मेंस. अभी यहाँ पे द रेगुलेटर SEBI है और उसको यहाँ पे एक सोल्यूशन दिख रहा है. ना इसमें से जो बात डिफॉल्ट का कारण बनी, इनफ्रक्शंस बनी, द कंपनीज that are rated are not required to provide full information while getting verified. Now this became the reason why the argument of SEBI regarding agencies is infructuous, that is ineffective. क्योंकि ये लोग तो पहले ही जिसको क्रेडिट देना है, maybe see this line, SEBI laid down a new standard framework for financial disclosure that it believes it will enhance the quality of information made available to these agencies to investors. यहाँ पे हमें बराबर प्रॉपर इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं होने के कारण जो इनफ्रक्शंस होना है, इनइफेक्टिव होना है, वो होते हुए दिख रहा है. सो आंसर वाज ओनली द सेकंड वन. Companies have defaulted, other options are out of reckoning of the international accounting standards. International accounting standards की तो बात हुई नहीं है. Something which is not mentioned over here cannot be the part of an argument related to the same passage. SEBI has not taken into the account the fact that companies that have defaulted are not always rated by. But we get to see they are rated by. तो दो irrelevant options मेरे पास मिल रहे थे.
Which among the following, if done along with the actions, will make sure that the present situation does not become a recurring event? वो infractious होने को हटाने की बात हो रही. Now please understand this. This is a question of something maybe you have to assume or suppose. If done along with the actions taken by SEBI. तो SEBI यहाँ पे क्या actions ले रहा है? एक नया standard lay down करा है, framework lay down करा है. So the market regulator should make sure that the management is sacked once it proved that there is some foul play in the accounting practices. So first wala is definitely something that will support the new framework. The government should make it a norm that the company's floating debt instrument should disclose all debt obligations every month without fail. रेगुलर अपडेट मिलती रहेगी तो भी वो हमारी हेल्प करेगा. सेबी का जो नया फ्रेमवर्क है उसमें हेल्प करेगा, बिकॉज सेबी इज आस्किंग फॉर more transparency. That is clear from the passage. The defaulting company should make sure that recognized agencies are given the responsibility. अभी अगर कंपनीज जो डिफॉल्ट कर रही हैं, they are making sure that only the agencies are given responsibility. हमारी तो कोई गलती नहीं. This is absolutely wrong. Not what it is in line with SEBI. तो यहाँ पे आपका फर्स्ट एंड द सेकेंड वन. ठीक है, थोड़ा सा लैंग्वेज वाइज थोड़ा टेक्निकल साइड पे था. सो कीप रीडिंग, कंटिन्यू रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग. इट इज definitely going to help you a lot. See you in another lecture. Till then, take care. Don't forget to like, share and subscribe.